You're absolutely right. Today, 3 months after it possibly happened, the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarjit P. Singh, has come openly in a conference, and it's probably with the permission of the Prime Minister and the Defence Minister, has told the nation and the whole world that Sindur was a mission in which 5 Pakistani aircraft were shot down by possibly S-500 Russian missile system. Also one bigger aircraft. Up to date, we knew that on the 6th, 7th night, the Indian Air Force, the Indian Army missiles had hit 9 targets, terror targets in Pakistan. It was a victory. We also knew later, when it became a hot war, when Pakistan tried to retaliate, that we had hit their Air Force bases. The damage was seen by satellites, and every television showed it to us. But today, in a tremendously new revolution, which the world is going to analyze, which Pakistan is going to analyze, that something new has come into the picture. The Chief of Defence Staff, General Chauhan, when he went for the Shangri-La conference, did say that we had some setbacks, but the tactics were corrected. So you're absolutely right. Something very revolutionary has been told to the nation and to the world, that Sindur was not only a victory as we knew it, but today we know it was a great victory. The Indian Air Force, with its aircraft, which has got Su-30, which has got the KH-35 missile, the BrahMos missile, the new Rampage Israeli missile, 250 kilometer supersonic air to surface, are BrahMos missiles of the army, and the land attack missiles have done a wonderful job, decimated 6 aircraft. Which are the 6 aircraft? We still do not be clear, because the Pakistan has got the F-16, has got the J-10 and the J-20 from China. So one can say very clearly, Sindur was a great victory. It is still going on. Sir, AP Singh has said that people are close to us said, "Abhi और मारना था, but we can continue to be at war?" Question mark. The nation has taken a good decision, says the Air Staff Air Chief Marshal AP Singh, backing the decision to pause Operation Sindur. Now, Air Chief Marshal AP Singh has also gone back and mentioned the Balakot, that in the Balakot we used Spice missiles and hit their terror target, but unfortunately one of our aircraft went down. But in Sindur, we have had no damage at all. I mean, what little damage there was. And only thing the Chief of Defence Staff, General Chauhan in Singapore said, there is a slight setback. But after that, the revelations that have been made, that 6 aircraft shot down at a range of 300 kilometers. I mean, the world will be investigating this. Pakistan will have to answer. And I think as a controller, when you see a radar target and you attack it, when the radar target disappears, then you know it is shot down. The Air Chief Marshal also mentioned that. And therefore, he was able to calculate. The question comes, why has it been done so late? Well, probably they were doing a lot of analysis to get everything perfect and to put it out at the right time. Therefore, we must congratulate the Indian Armed Forces, the Army, the Air Force, and the Navy was there outside Makran coast doing what is called the naval maneuver and to blockade Pakistan. No food and oil. And if by chance they use their missiles on the port or Makran coast, it would have been havoc. Last question to you, sir. The Air Chief said India's defense production reaches all-time high over 1.5 lakh crore in 24-25 fiscal. There is a robust 18% growth over previous fiscal output of 1.27 lakh crore and 90% increase since 2019-20. How do you look at it? It's a good thing for the Indian defense structure? Well, India's economy has moved up, and therefore the allocations to the defense have gone up. Also, what has happened,
President Trump has asked NATO to increase its percentage of spending on defense. This has had an effect on India. And Pradhan Mantri, Prime Minister Narendra Modi's Atmanirbharta has said that let's produce more in India. So much more money has given, 1.27 crores, as the Air Chief has mentioned. The Navy has got production of 1.29 crores. The Army also, even 2 days ago, in the 67,000 crore allotment. So what the Air Chief was saying, because he knows the exact figures, he's got the exact figures, and he's told the country the exact figures of what the government has done, 18% up on many systems. And we should not be at least rather complacent. Because Atmanirbharta, the weapons that were used, the Akash, made in India, Akshatir, Akash Tir, made in India, all components made in India, BrahMos, made in India, have been a tremendous success. So we should be very proud of India today, proud of our armed forces, and proud of our leadership. Because another thing that Air Chief Marshal said, that the Prime Minister and the Defense Minister had given complete latitude to the armed forces. हिंदी में कहते हैं, हमको पूरी ढील दे दी थी. जब ढील देते हैं, तभी कमाल होता है. और जो हमने लक्ष्य में, we have managed to get victory. Sindur was a big, big victory. The whole world and Pakistan will now be telling us their side of the story. लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के नेता भी जवाब मांग रहे हैं. आखिर कितना नुकसान हुआ, क्या भारतीय जो लड़ाकू विमान था वो गिराए गए? इन सब सवालों के बीच आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सामने आए, सभी सवालों का जवाब दिया, बड़े तरीके से स्पष्टतापूर्ण जवाब दिया. कहा ऑपरेशन सिंदूर भारत का सबसे सफल ऑपरेशन था, पाकिस्तानी जेट्स गिराए गए, एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, बहुत सारी बातें करी. काफी लंबा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा. किस तरह से देख रहे हैं आप जो एपी सिंह ने कहा? बिल्कुल ठीक आपने बोला. अब तक हमको पता था कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था. जब मई में 6-7 की रात को 9 टेररिस्ट की जगह हमने मारा, कोई उसके तरफ डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ टेरर टारगेट और उनके जो ठिकाने थे उन पे हुआ. लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, एयर चीफ मार्शल अमरजीत पी सिंह ने पूरी दुनिया को और हमारे टेलीविजन के जरिए एक कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी लड़ाके हवाई जहाज हमने गिराए. S-400 या हवाई जहाज के एंटी एयर BVR मिसाइल 6 गिरा दिए. वो कहते हैं एक और भी बड़ा जो EW एयरक्राफ्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त जरूरी एयरक्राफ्ट होता है, उसको भी मार गिराया. तो हमको तो पता था कि जब लड़ाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई, हमने कितने उनके बेसेस को इतना डैमेज किया, क्या उधर जाके उनका नष्ट किया. वो तो सैटेलाइट के जरिए तमाम पेपर में, टीवी में आ गए थे. लेकिन आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सब बता दिया कि क्या क्या किया. ये भी बोला S-400 जो रशिया से हमने लिया है, लॉन्ग रेंज एंटी मिसाइल, 300 किलोमीटर तक उन्होंने जहाज को गिराया है. पाकिस्तान के 5 जहाज और 6ठा बड़ा. पहली मेरे ख्याल इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 300 किलोमीटर की दूरी पे हमने जो अटैक किया और मार गिराया. मैं कंट्रोलर हूँ, पता है रेडार पे दिखाई देता है और पता चलता है जब रेडार का कांटेक्ट गिर गया, मतलब ये जहाज. तो अभी उन्होंने एनालिसिस करके मेरे ख्याल प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने उनको ढील दी होगी कि अपने देश को स्पष्ट से बता दो सिंदूर में क्या हुआ. भारत की बहुत बड़ी जीत थी और सलामी देनी चाहिए हमको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को, क्योंकि वो भी मकरान कोस्ट के बाहर उनके ब्राह्मोस मिसाइल, MiG-29 के KH-35 क्लब मिसाइल भी तैयार थे. लेकिन अगर जो वो हमला में हो गए तो पाकिस्तान के जो बंदरगाह हैं, कराची, ग्वादर, वो बिल्कुल नष्ट हो जाते. सर, एपी सिंह ने ये भी कहा कि ऑपरेशन के बाद जब उनकी लोगों से बातचीत हुई, जो क्लोज थे उनको, उन्होंने कहा कि अभी और मारना था, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा कि वी आर नॉट इन दी स्टेट ऑफ वॉर, हमें ऑपरेशन करना था, हमने ऑपरेशन किया, उसके बाद ऑपरेशन क्लोज किया, जिसके समर्थन में खड़े नजर आए. उन्होंने ये भी कहा कि
पाकिस्तान के एयरबेस को हमने गिराया, जिसमें कुछ AEW स्पेशल एयरक्राफ्ट होने की संभावना भी है, F-16 जैसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाई जहाज भी होने का अनुमान है जो अमेरिका का, जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, एयरबेस उड़ाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, एयर चीफ मार्शल अमरजीत प्रीत सिंह जो आज जो बोला है, ठंडे दिमाग से पूरी दुनिया को समझाए कि पाकिस्तान के पास कौन से जहाज हैं। F-16 है अमेरिका का, J-20 है, J-10 है चाइना से दिए हुआ, QHQ सिस्टम्स है, एंटी एयरक्राफ्ट उनके पास, सब उन्होंने समझाया। लेकिन ये उन्होंने कहा कि सिंदूर जारी है। इसका मतलब जिस ठंडे दिमाग से सिंदूर किया गया था, वो भी हमारे जो 3 आर्म फोर्सेस हैं बिल्कुल तैयारी में है, लेकिन ठंडे दिमाग से तैयारी में है, क्योंकि उनके जो ट्रेनिंग है, उनकी जो प्रिपरेशन है, और आपने भी बोला उनको जो पैसा मिला है आत्मनिर्भरता के सामान लेने के लिए, हथियार लेने के लिए, तो उन्होंने हमारी हौसला दिया पूरी देश को कि सिंदूर के लिए हम तैयार हैं। बिकॉज प्रधानमंत्री ने कहा सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर। इंडस ट्रीटी को जो हमने अभियान में रखा हुआ है वो भी चल रही है, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि उनको को एयर चीफ मार्शल को परमिशन दी गया कि ये सब स्पष्ट कर दो। बहुत अच्छी बात है देश के लिए, हमें पता लग गया कि हमारी सेनाओं ने क्या किया है, और देखना पड़ेगा अब दुनिया क्या बोलती है और दुनिया पाकिस्तान की क्या बताती है, कहाँ गिरे ये जहाज, क्या हुआ उस देश की हालत का। और ये एक बड़ा सवाल होगा जिससे हमें और खुशी होगी कि वो मान ले सिंदूर एक बहुत बड़ी विजय थी। We are very proud of our Indian Air Force. What Mr. Air Chief Marshal has said it today was told earlier also. But our opposition leaders and certain section of the society, as they did not want to give credit to the Narendra Modi government, they were trying to put down the defense achievement. Today, it is a hard slap on all those disgruntled elements. Sir, how do you see the statement made by the Air Chief Marshal today? He clearly stated one thing, that 5 fighter jets were being shot down at the time of the Operation Sindur. But other side, the integrity of the Army and Air Force was questioned by several people. The significant victory of Operation Sindur was exemplified by our Air Chief Marshal today. The several disgruntled elements who wanted to put down the operation, as they didn't want to give credit to the Narendra Modi government, have had a very good slap on their face today. Our Air Chief Marshal has clarified 5 fighter jets have been shot down. It is a lesson to those who were speaking against the nation's interest and supporting the Pakistan line. It is very sad. They should realize India's valor is not for compromise. We should all stand behind the Indian Army and its achievements. That is the nationalism of this nation. Politics apart.